Hello everyone. Welcome to class 10th. Today, welcome to class. Today as we have begun our course of class 10th, so today we will be going to we have started today not going to we have but we have started today the chapter 1, the development of economics. ठीक है, हमने ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर लिया है. 1 minute. कुछ हेडेक भी हो रहा है. ठीक है. डेवलपमेंट, as we know that कि this word, when we break the development word, it is become with develop plus ment. These two words, when we break it from here like this, but when we break it from here, sorry friends, when we break it from here, the word becomes develop and ment. So when we join it together, it becomes development. Okay, जब हम इसे तोड़ते हैं. ठीक है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. Line by line explanation, trying to give line by line explanation. The development of India or a progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what the country should be like. What are the essential things that we require? That हमारे साथ ये जो आइडिया है the ideas of development or a progress has always been with us. We have aspirations and desires about what we would like to do and how would like to live. Similarly, we have ideas about what the country should be like. मतलब कि फ्रेंड्स, मतलब इसका ये है, जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जब हमारे माइंड में जब डेवलपमेंट का आइडिया आता है, उसका मतलब होता है प्रोग्रेस, जो हमारे साथ हमेशा रहती है. हमारे पास डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो कि हम खुशी खुशी से उन्हें हम करते हैं और अच्छी तरह से हम रहते हैं, हम पसंद करते हैं रहना. सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. उसी तरह हमारे पास हमारा आइडिया है कि हमारी कंट्री जो है कैसी हो दिखनी चाहिए. ठीक है. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality, development?
involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving. मतलब कि जो हमारे पास कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या एसेंशियल थिंग्स होने चाहिए, क्या हमारे पास लाइफ बेटर होनी चाहिए सबकी, क्या हमें एक साथ रहना चाहिए, क्या हम कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी होनी चाहिए. जो डेवलपमेंट इन्वॉल्व करती है थिंकिंग. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work together achieving. मतलब जो डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करते हैं थिंकिंग और क्वेश्चंस जो कि हमारे वेज क्वेश्चंस जो कि हम अबाउट आर वेज, जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं उस वेज में जो कि जो विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग, जो हम वर्क करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग. ठीक है. Achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter we shall make beginnings of understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions. मतलब हम अचीव करने के लिए कुछ गोल्स जो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है. इस चैप्टर में हम बस बिगनिंग बनाएंगे अंडरस्टैंड करने डेवलपमेंट. उसके लिए आपको इसके इश्यूज को ग्रेटर डेप्थ में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स. आप आंसर्स भी फाइंड कर पाएंगे मैनी क्वेश्चंस के. not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is also thought a democratic politics process that these hopes and थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल्स. ठीक है. Not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. मतलब कि हम इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स में नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट जो हमारे कोर्स में जो आपकी हिस्ट्री की बुक क्या, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस. दिस इज बिकॉज उसमें भी बता रखा है कि जो हम जिस वे में हम रहते हैं उसी वे में हम पास्ट में रहते थे. इन्फ्लुएंस्ड इन पास्ट, उसी वे में हम इन्फ्लुएंस हुए थे इसमें पास्ट में. Influenced in past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is also only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. मतलब हम डिज़ायर कर सकते कि जो चेंजेस हैं
विदाउट बीइंग अवेयर, हम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ चेंजेस, मतलब कि हम बिना अवेयर हुए चेंजेस के हम सेम वे में उस प्रोसेस को उस इट इज ओनली थ्रू, वही एक थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो हमारे होप्स और पॉसिबिलिटीज को अचीव कर सकता है रियल लाइफ में. What people develop. Now here our chapter begins. What development promises different people different goals. क्या डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. Here to the left, here to the left, one dialogue is written. You want a car, the way our country is set up, all you can hope for this. Here is that one dialogue written left side. I'm reading it. You want a car, the way our car is. Sorry, you want a car, the way our country is set up, all you can hope for this. Why be? Maybe to only a day, maybe to one day. Own the rickshaw you pull. Okay? मतलब कि वो रिक्शे वाले की चाहत है कि हम मुझे कार चाहिए, वो कह रहा है कि तुम्हें कार चाहिए, जैसी हमारी कंट्री है वैसे ही होप्स लगा के रखो, मे भी किसी दिन हमें रिक्शा को ही पुल करना पड़े. ओके बच्चे, सॉरी. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean. Two different persons listed in table with 1.1. What are their aspirations? You will find the some column and partially filled. Try to complete the table. You can also add another category or persons. Means अब हमें ट्राई करना, हमें इमेजिन करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेसेस और लाइकली मीन्स है डिफरेंट पर्संस के जो लिस्ट किए गए हैं टेबल 1.1 में. अब व्हाट आर द एस्पायरेशन, अब उनके एस्पायरेशंस क्या हैं. यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड. आप देखोगे कि कुछ कॉलम्स जो हैं वो पार्शियली फिल्ड हैं. ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी टू द पर्सन. आप ट्राई करें कंप्लीट करने के लिए टेबल की जो उसमें आप क्या कैटेगरीज और ऐड कर सकते हैं पर्सन्स की. ठीक है. Landless rural labor, more days of work and better wages. Local school is able to provide quality education for the children. There is no social discrimination and they too can become leaders in the village. Prosperous farmers from Punjab assumed a high family income through their higher support prices for their crops and through hard-working and cheap laborers. They should be able to settle their children abroad. Farmers who depend only on rain for growing crops. In developments and goals, you have to do it on your own. जितने भी ये ब्लैंक्स है ना, यू कैन राइट दिस टेबल इन योर रफ. जितने भी ये ब्लैंक्स हैं फिल इट. जितने भी ये ब्लैंक्स छूटे हैं जितने भी नीचे, मतलब ठीक है.
Have you filled table 1.1? Let us know. Examine that. Examine it. Do all these persons having filled table 1.1? Let us examine it. Do all these persons have the same notice of development in progress? Most likely not. Each of them seeks different things. They seek things that most important for them, i.e., that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times two persons or groups of persons may seek things. मतलब कि जो ये टेबल है जो 1.1 जो हम एग्जामिन किया है जो दो पर्सन क्या इसमें सारे पर्सन नोटिस कर सकते हैं सेम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को और ज्यादातर कोई नहीं. ईच ऑफ दैम सीक्स डिफरेंट थिंग्स. क्या सभी डिफरेंट थिंग्स को सीख करते हैं. दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. वो थिंग्स को सीख करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. दैट विच कैन फुलफिल द एस्पायरेशन. क्या वो फुलफिल कर सके एस्पायरेशन और डिजायर्स को जो इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स और पर्सन कैन नहीं सीख. इनफैक्ट कुछ टाइम्स पे दो पर्सन या ग्रुप्स मे सीक थिंग्स कैन सीक और मे सीक थिंग्स. अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists this may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams for tanks to irrigate their land. मतलब कि जो कन्फ्लिक्टिंग है जो एक गर्ल है उसके पास फ्रीडम है और अपॉर्चुनिटी है कि उसका ब्रदर जो है वो हमेशा हाउस होल्ड वर्क को शेयर्स कर देता है. उसके भाई को ऐसा नहीं लग रहा है. उसके ब्रदर को ऐसा लग रहा है. सिमिलरली ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने सोचा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहिए. बट दिस में सबमर्ज. मतलब उन्हें लगा कि ये सबमर्ज हो जाएगा. ये लैंड जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और जो लाइव्स ऑफ पीपल हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी. जैसे कि ट्राइबल्स उन्होंने रिसेट किए हैं. रिसेंट दिस उन्हें रिसेंट कर वापस कर दिया जाएगा और उन्होंने प्रेफर किया स्मॉल चेक डैम्स को और टैंक्स को टू इरिगेट देयर लैंड. उन्होंने इरिगेट करने के लिए. So two things are quite clear. One, different person can have different development goals, and two, what may be different development for one may not be the development for the others. They may even be destructive to the others. मतलब one person thought those people don't want to develop. मतलब हाँ हर किसी का अलग अलग अपना अपना डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं.
In incomes and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common things which people desire are regular work, better wages, and decent prices for these crops or other products that they produce. In other words, they want a more income. इसमें और कुछ नहीं है, इसमें यही सब है। और गोल्स भी हर किसी के, मैं आप सबको बता दूं कि गोल्स भी हर किसी के अलग अलग होते हैं। किसी का हमारे डेवलप्ड पीपल की तरह कोई गोल नहीं होता ज्यादातर। लेट्स वर्क दीज आउट। Why do different people have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? Because people are different, because life situations of persons are different, because because life situations of people are different. Option number B. Because life situations of people are different. Though the following two statement means the same, justify your answer. People have different development goals. People have conflicting development goals. People have different development goals. Justify. You have to justify this answer कि people के different goals इसलिए होते हैं क्योंकि वह अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, उस वजह से उनके different goals होते हैं. Conflicting development goals किसी के नहीं होते, जो मतलब कि जो डेवलपिंग करना चाहते हैं उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं गोल्स. इसलिए ये वाला सही है, इस वाले का थोड़ा सा गलत है. बट आप एक बार कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है. दोनों का नहीं ठीक है, इसमें से एक वाली फर्स्ट वाली ठीक है जहां तक लग रहा है, ठीक है. बट give some examples where factors other than income are important aspect of our life. ये दो आपको खुद सोचने समझने, ठीक है, खुद. अब दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. ऊपर वाले में do the following statement में दोनों वाले करेक्ट है, ठीक है. However, can all the ideas be considered equally important? One of these, ठीक है. और इफ दे आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे बीच में. लेट्स वर्क दीज आउट. डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस. Look at the picture on the right. What should be the developmental goal for such an area? The courts under the building, the courts in front of the building, that should be the development goal to develop them people. Read this newspaper report and answer the questions that follows. A vessel dumped 15 tons of liquid toxic waste into open area drums in the city and in the surrounding seas. This happens in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The
fumes from highly toxic waste. From the highly toxic waste cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poison. A multinational company dealing in petroleum and metals has contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from their ships. Who are the who are the people who benefited and who did not? The people of the multinational company were not benefited, but the vessel dumped toxins of liquid waste upon air and drummed in the city. That people, those who have drummed them in the city, were benefited, but multinational company of dealing in petroleum were not benefited. Why should be the development goal for this country? What should be the development goal for the country? The development goal for the country should be after do not what should be the development goal for this country? The development goal for this country should be no poisonous dangerous things could become, and this is the main. What do you think? Okay, what can be some of the developmental goals for your village, town or locality? आपको अपने हिसाब से देखना होगा. Activity, if even the idea of what constitutes development can be varied and conflict there, certainly this is not perfect. Now half chapter I have discussed. Now the rest of that you have to read, because you should read. ठीक है. Bye bye everyone. So if you want, please subscribe my channel and give me likes and views so that I could make good videos for you people.